see the reflection of the people going back. But it's not a CG shot, it's a live shot. वाव ये क्रेजी डिटेल थी. वाओ. हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में. और आज हम लेके आए हैं RRR इंट्रो सीन की मेकिंग का रिएक्शन. सो RRR वालों ने ये बहुत कमाल की चीज़ निकाली है. उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली है अबाउट RRR बिहाइंड एंड बियॉन्ड. सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज हमेशा से ना आप मूवीज़ देखते हो और आप फिर अब इंटरव्यूज़ में ढूंढते रहते हो उसकी डिटेल्स कि लोग बताते हैं कि हाँ हमने ये किया था वो किया था. पर जब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री आती है ना, ये हमने देखा है कि हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा होता है एंड लोग बहुत उसको फॉलो करते हैं एंड डायरेक्टर्स कट करके पूरा रिलीज़ होता है, फिर अलग से चीज़ें आती हैं, फिर साथ में और बहुत सारी आपको चीज़ें मिलती हैं. और सेम यहाँ पे भी उतने ही पैशनेट व्यूअर्स हैं और लाइक मेरे को भी बहुत फैसिनेशन होता है RRR के. मैं इंटरव्यूज मैंने करीब करीब सारे ही देखे होंगे. तो साथ ही साथ अब जब ये डॉक्यूमेंट्री आई ना तो हमें एक वो मौका मिलता है कि एक राजामौली सर के दिमाग में और लाइक वो कैसे करते हैं ना वो चीज़ देखने का. सच में. एंड वर्स्ट थिंग इज कि मैंने देखी नहीं है मूवी अब तक, तो मेरे लिए तो डायरेक्टली बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज इसने मूवी देखी होगी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट और रिलेट कर पाएगा. अच्छा यहाँ पे ये हुआ था तो इसका बिहाइंड द सीन ऐसा था. तो मेरे लिए तो ये टोटली न्यू चीज़ है. मेरे को लगता है इसके बाद मेरे को डेफिनेटली RRR देखनी चाहिए. मेरे ख्याल से तेरे लिए ऐसा हो जाएगा कि तू बनते हुए चीज़ें देख फिर उसका हाँ. उसका प्रोडक्शन देखना. हमने प्रोडक्शन काफी देखी है, unique हो जाएगा. अब हम बनते हुए देख रहे हैं क्या होगा. तो मेरे ख्याल से देखना. और इंट्रो सीन जो था ना वो तो इतना ज़बरदस्त था. लाइक मेरे को अभी तक याद है वो किस तरीके से वो रामचंद्र जी आते हैं और वो उनका जो पुलिस वाले रूप में वो लड़ाई करते हैं. आई एम फीलिंग सो बैड यार. को देखनी है अब तो. सही में. और साथ में सिमिलरली जूनियर NTR का जो इंट्रो था वो भी कितना ज़्यादा खतरनाक था, एक बहुत वाइल्ड था. सो देखते हैं क्या होगा. तो आप भी देखो, हम देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. मेकिंग ऑफ द फायर. ओह ये पुलिस स्टेशन. ओह वाह. इसमें कुछ वॉर जैसा था क्या? अरे क्या था? ये सारे All इंडियंस films I थे. made, never did और I ये- once think or fear that this is an idea that I can't bring it onto the film. That happened with Ram's introduction. As you see, we are shooting my intro with close to. एंड पता है मैं इस सीन के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये एक सीन ऐसा है जिसके लिए मुझे एक्चुअली एक पुलिस वाले ने रोका हुआ है एंड उसने बोला कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं दिखाई है. मतलब क्योंकि क्या था ये सीन में ऐसा है कि जो रामचंद्र जी हैं वो पुलिस वाले हैं, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के पुलिस वाले हैं और उस टाइम इंडियंस जो थे वो काइंड ऑफ हाँ, धरना वो करते यूनिफॉर्म थे. से लग ही रहा है. तो वो धरना करते थे तो वो आके सबको मारते हैं. इंडियंस को मारते हैं. हाँ इंडियंस को ही मारते हैं अपने खुद इंडियन होने के बाद वो भी. तो ब्रिटिशर्स के साथ मतलब मिले हुए हैं. हाँ मतलब ऑफ कोर्स उनके पुलिस वाले तो उनकी करनी पड़ेगी. तो वहाँ वो करते हैं. तो मेरे को एक पुलिस वाले ने पकड़ा था तो उसने पूछा था क्या काम करते हो, तो मैंने सब बताया. तो उसने RRR मूवी के बारे में बताया. बोलता है मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी यार, हमारे देश वालों को ही मार रहे थे. मैंने बोला लेकिन अब वो उस टाइम के बारे में था. मूवी है, हाँ. तो कितना इम्पैक्ट डालता है ना वो चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पे. 800 to 900 people, which might look like 6,000 or 7,000 people Wow. on screen. A mob mentality kind of a fight, suffocating me, all falling on me at once, and how I get out of this. I don't know if I'm prepared. I am preparing myself every day. There is a new challenges. Quite a dusty fight. Definitely, I call this a sinus fight. Definitely, I'm going to get some sinus problems. ओह ये साइनस प्रॉब्लम. तो ये अकेले मारते थे क्या इतने इंडियंस? हाँ कैसे कैसे शॉट्स है नहीं. Because he has a perfect body, neat body. So you just give him a uniform, he'll look like a cop. The cop hair would be actually very short, but we didn't want him to have such short hair. Those are all little cinematic liberties that we took, left him with the right amount of hair, which made him look very handsome. Why is Ram beating his own people? By his demeanor, by his look, Yeah. by the way he's progressing, you can see he's a hero. But by his action, he looks like a villain. Actually. so that gives an intrigue to the character. How he could imagine such a beautiful, magnanimous, big, almost impossible to conceive such an episode. There's a guy who takes a stone and throws it on his head. After that, for a few seconds, the suffocation, how he gets out of the suffocation and again goes towards the goal of catching that guy in the turban. That part was the most interesting part for me, the most difficult part also. Oh my Very god. difficult यार. He's surrounded by everyone. I didn't want any of the fighters dancing in the background. Everyone has to fall on him, and still he has to manage to go
and get his prize. लाइक खतरों के खिलाड़ी भाई कुछ चल रहा है यहाँ पे. वो तो एक्चुअली जब मुझे लगा था वो उनको ले लिया होगा वहां से. Solomon, Oh my my God. stunt choreographer, I explained him. మన హిస్టరీలో మహాభారతం కురుక్షేత్ర యుద్ధం మీకు తెలుసు కదా అభిమన్యుడు అభిమన్యు, వేల yes. మందిని అకేలే ఆ वो కురుక్షేత్ర गए थे యుద్ధంలో ఏ చక్రవ్యూహ రకంగా ఫైట్ చేస్తాడు Goosebumps. కంపోజ్ మస్ట్ మొత్తం చెప్పినప్పుడు రిహార్సల్ చేసి షూట్ చేసి ఎడిట్ చేసి వన్ డే నేను డైరెక్ట్ గా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు And I saw that and I went, wow. It was wow. It's played on brass section. I need some other quotient here which denotes his determination and strength. That goes on a cello. Da-da-da-da-da-dum, da-da-da-da-da-dum, da-da-da-da-da-dum. Come what may, come what may. म्यूजिक में भी वो है यार, लिरिक्स है इनके. The audience needed to have that claustrophobic feel. My cinematographer, he immediately understood what I was looking at. We wanted it to be extremely rustic and realistic kind of a thing. So for this, we used extensive handheld cameras, sync with the action choreography which was happening. Oh my god. Wow. Okay, shot okay. With the idea of I'm going to arrest the bastard and bring him to me are the two sentences, and he twisted, he stretched them, altercations to that particular sound, and he pasted music over that. Arrest that bastard! And bring him to me. भैया bastard कौन है? इंडियंस को वो बोल रहा है, एक इंडियन ने उसको पत्थर मारा था. Cuts of wide shots make the scene look unbelievable. He also did a mock shoot of the whole thing. You know, lots of decisions were made that probably it's better to have the camera inside the crowd and not outside the crowd. Dust was so high in the air that people didn't know after the same cut where I was. There was a guy with a white flag waving to the director and the team. The hero is right here. So then he used to find me and go catch me there and get me out. So crazy. There is a shot which Sendhil has placed the camera near the eye, and you can see the reflection of the people going back. But it's not a CG shot, it's a live shot. Wow. ये crazy detail थी. Wow. God. ये शायद मुझे याद भी नहीं था. जिन्हें एनटीआर भी देखने आए थे, अब उनकी बारी. तो ऐसा था, वो फायर है और ये वाटर है. एक इंट्रोडक्शन ऐसा था कि मेकिंग ऑफ फायर, मेकिंग ऑफ वाटर. अच्छा वो फायर है, अभी ये ठंडे. हाँ, वो वैसे ठंडा तो- नहीं है, वो पानी का उफान, हर चीज. बहुत ऐसे लगता है, प्यारे लगता है मेरे को फेस वाइज. ये स्टार्टिंग शॉट एंड देन रनिंग. He is from a tribe called Gond, and he is called Gond Bebuli, which means the tiger of the Gond tribe, the tiger, the national animal of India. I love everything about it. For a long time, I harbored the idea of having a tiger sequence. The introduction of Bheem provided me with that. I was actually waiting to shoot for the sequence. I was very excited when I got into the sets. It was fun to watch so much technique. This man is so sure about what he wants and how he wants not only his actors, particular about his CG tigers too. To use his community identity, that's Gonde, introduction theme, Gonde. Yes. It's like a wild animal cry which can stand against a wild roar of a lion or tiger. यार म्यूजिक के पीछे का मीनिंग समझ के ना और मजा आता है. There was a lot of physical endurance Tiger के which साथ fight करते हैं वो. commanded from my side because that was the only sequence in the movie where you could actually see Bheem, showing his body off. But he was very particular about how the body needs to look. He did not want me to become very lean. He did not want me to have these dried out six-pack or he just wanted me to look like a very strong bull. Wow. When a bull is facing off a tiger. He wanted me to look like, Bheem comes from the forest and he's an Adivasi. So he wanted me to look He a looks very like strong one also. tribal, and that's why
The reason why he did not want me to take my body hair off. He wanted me to be very masculine very for that movie. natural. To get that tiger feel in the on location, we did two things. One is that blue 10 feet dummy. We got one 6.5 foot stuntman to get that real weight, so Tarak can feel and act, emote that. Lighting we captured through the HDR model. We are able to create that. Ooh, what was that? Gave ये him क्या a था? bare body to show his physical strength. Because he's from a forest, and the forest people are generally physically very fit and strong. Moves slowly and then it rotates. The same moment we also did it emulated in the location. So we merged the plates in CG later. It sets the mood of what we are going to tell in the story. ये क्या है? क्या बात है यार। Woo! अब मेरे को भी वापस से देखनी है मूवी। Oh. Beam had to run real fast. So the person who was holding the camera and running, he's a Yes, parkour he guy. has I said run so action, fast. and Tarak ran so fast. तारक इस पास। I still remember the look of the cameraman's face. He said, "Oh my God, I need to put my running shoes on." He said, "Let's do it again." क्या बात है भाई, कैमरामैन के लिए तालियां। क्या रफ्तार है भाई। और गाड़ी लगा ली उन्होंने। Oh my God. When we had Tarak jump in the air, there was no tiger, there was no wolf when we shot it. But the moment I saw his body turning in the air and going out, I thought, wow, I got my shot. वाह, और ये बहुत आइकॉनिक शॉट था भाई। The speed of the animals are extremely high. So we did the animations first. Then we realized what's the speed of the animal, and according to the animations, we made the actors act. Doubly difficult for Tarak. It's not just imagining the animal, he has to imagine the animal with the correct speed, correct movement, and deliver his performance. क्या डिटेलिंग है। और ये वाला कैसे हुआ? इसमें बहुत रियल लग रहा था। Physically a very strong man and emotionally very vulnerable person. Once the sequence is over, once the tiger is laying down unconscious, the way he picks it up and says, "I'm sorry brother, I had to do this," that is what really connects me to the audience. అక్కర కొరకు నిన్ను వాడుకుంటున్నా తమ్ముడు మన్నించరా I want like two heroes face to face and shouting at each other. the ropes. He did not want to take this cinematic liberty there. So while I was pulling the ropes, there were counterweights also attached to the rope. So that Actual it looks weights. very natural that you're actually pulling a rope rather than just flexing your muscle. So it was very Real. beautifully and aesthetically designed, where the brutal strength, the hard work of the artist is shown, the brutal strength of the character is seen, and plus you have that raw sequence which is happening between a human and an animal, a wild animal. One of the iconic shots of RRR is the face-to-face with the tiger. All throughout the sequence, you see the Beam is not happy with what he's doing. There's a kind of vulnerability on his face. In this particular shot, you can't show empathy toward the tiger. That doesn't mean you have to be angry with it. The shout is for you to get your energy pumped up. And when we did that, the roar that he gave, I had goosebumps while shooting it. I had shot not with one tiger but two tigers. Oh, wow. Wow. Two tigers. An interesting characterization or behavior is not that difficult, but creating the reason for why they are behaving in such a way. यार ये इस मूवी के लिए अलग जुड़ाव आ चुका है एंड अब एक अलग स्कोप आ चुका है कि किस तरीके से एफर्ट डाला गया है, चीज़ें की गई हैं। मुझे हमेशा होता था कि वो शॉट होता है, उसके बाद एडिटिंग में और पोस्ट प्रोडक्शन में चीज़ें की जाती हैं, फिर वो टाइगर और सब किया गया होगा। बट यहाँ पे वो कैसे बता रहे हैं कि उन्होंने पहले ही पूरा का पूरा एनिमेशन कर लिया था कि टाइगर स्पीड क्या होगी और उसके हिसाब से मैच किया गया था।
वो शॉट, इवन जो रामचंद्र जी के शॉट्स थे, लाइक कैसे क्राउड के अंदर जा जाके उन्होंने शूट किया है, एंड लाइक वो तभी इतना खतरनाक शॉट लग रहा था, वो ऐसा शॉट लग रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ, इतना खुद भी बुरा लग रहा था कि इंडियंस हो के इंडियन को मार रहे हैं, पर वही तो वो फील कराना चाहते थे। सच में मतलब यार ये कैसी डिटेल्स है, मतलब मैं सोच रही हूँ कि हम जैसे कि मैंने RRR तो देखी नहीं, पर हम दूसरी मूवीज़ में देखते हैं कि कोई किसी जानवर से लड़ रहा है या कुछ आ रहा है, तो हम हमारे माइंड में आता है अच्छा ठीक है एडिटिंग है, ठीक है, स्पेसिफिक मीनिंग्स या वर्ड्स भी नहीं पता होते कि इसको क्या बोलते हैं, बट एडिटिंग है, ये सारी एडिटिंग है। पर भाई उस एडिटिंग के पीछे की जो डिटेलिंग है, एक एक छोटी छोटी चीज़, जैसे एंड द मोमेंट ही सेड ना कि मेरे को लगा कि मैं 2 टाइगर के साथ शूट कर रहा हूँ, दैट वाज अमेजिंग। बहुत गूज़बम्प्स देने वाली चीज़ थी वो। तो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।